Welcome back students to standard 9th maths chapter 7 triangles, and we are in the second session. Alright children, so in the previous session we learnt correspondences between the vertices of two triangles. So how many correspondences are possible? Yes, 6 correspondences are possible, correct? Then we learnt about corresponding paths, that is corresponding angles and corresponding sides. Alright, we also saw the concept of congruent figures. Alright, today we saw congruent line segments, congruent angles. When are two line segments congruent? Yes, when they have equal measure, that is equal length. When are the two angles congruent? Yes, when they have equal measure. What do you mean by measure of an angle? The degree measure, 40 degree, 60 degree, 70 degree, okay? Fine. Now the question is, when are the two triangles congruent? Yes, we can say when they have equal measure. But what do you mean by equal measures of triangle? Children, every triangle has 3 sides and 3 angles. So all 3 corresponding angles and all 3 corresponding sides should be equal, should be same. Then we say they have equal measure. And then they are said to be congruent. And you know, if two line segments are congruent, they will coincide with each other. If two angles are congruent, they will coincide with each other. So if two triangles are congruent, they will coincide with each other. I've got two triangles. You can see ABC and PQR. Can you see two triangles? Triangle ABC, triangle PQR. Are these two triangles congruent? वो देखना होगा. तो हम लोग coincide करके देखते हैं. Let's try to overlap. Okay, here आपको blue और pink triangle दिखता है. After coinciding, after overlapping. Now do you see pink triangle? No, correct? Now do you see the blue triangle? No, I can see blue triangle, but I can't see the pink one. Alright? Now I can see the pink one, but I can't see the blue one. And you can see the blue one, but you can't see the pink one. And what is the reason? Because these two triangles coincide with each other. And because they coincide, they are congruent. Now, why they are congruent? देखो, पहले तो वो correspondence ले लो. ABC corresponds to PQR. 6 correspondences possible है. I'll write those 6 correspondences. So here are the 6 correspondences that are possible between black triangle ABC and red triangle PQR. Alright? So, लेकिन ये दो triangle जो आपको coincide होते हुए दिखते हैं, that means they are congruent. Why? For which correspondence they are congruent? PQR corresponds to ABC or ABC corresponds to PQR. So ये पहला वाला ABC corresponds to PQR. For that correspondence, children, देख लो, angle P or angle A, angle P or angle A, they are equal. Yes, now look at this angle Q. Angle Q and angle B, they are equal. Look at this angle R. Angle R or angle C, they are equal. देख लीजिए, ये angle R और angle C है. They are equal. ये दोनों equal है. फिर ये side PQ को देखो. Look at side PQ. PQ और AB, देखो, they are equal. Now side QR और side BC को देखो. Yes, I'll overlap, so those sides are also equal. The third side, AC और PR को देखो. See that they are also equal. उसका मतलब, now I'll talk about, for this correspondence, corresponding angle. Angle A
corresponds to angle P. Angle B corresponds to angle Q, or angle C corresponds to angle R. These are corresponding angles. Corresponding angles. Now I'll see corresponding sides. Corresponding sides. Alright? AB PQ. AB corresponds to PQ. BC QR. BC corresponds to PR. Sorry, QR. It is QR. Correct? And AC corresponds to PR. AC corresponds to PR. So for this correspondence between the vertices of triangle ABC and triangle PQR, these are corresponding angles and these are corresponding sides. We have just seen angle A and angle P are equal, children. They are congruent. Angle B and angle Q are also having same measure. Angle C and angle R are also having same measure. So corresponding angles are congruent. All corresponding angles are congruent. अब इसको देखो, side AB and side PQ, they are corresponding and they are equal. Side BC and side QR, they are also equal in length, and the third one is also equal in length. So I can say this corresponding sides are congruent. Right, children? Okay? Please, they are equal. और वो measure भी मैंने किया है. Angle P is 60 degree, angle A is also 60 degree. So they are equal. Angle B is 80 or angle Q is also 80. They are equal. Angle C is 40, angle R is also 40. They are equal. Measure of side AB is 15 centimeter and PQ is also 15 centimeter. Measure of side BC is 20.2 centimeter and measure of side QR is also 20.2. And third side AC is 23.1 centimeter long. PR is also 23.1 centimeter long. So all corresponding angles and corresponding sides of these two triangles are equal, are congruent for first correspondence. अब second correspondence लोगे तो देखो ये coincide हो रहा है ना चिल्ड्रन, आधे coinciding, yes, ये second correspondence, आधे coinciding नहीं, third correspondence, ऐसे आधे coinciding नहीं, fourth correspondence, आधे coinciding no, fifth correspondence, आधे coinciding no, sixth correspondence, आधे coinciding no. लेकिन ये पहला वाला जो correspondence, 6 में से कोई एक correspondence के लिए ही the two triangles will coincide. Please remember, okay? चलिए. So triangle ABC and triangle PQR are congruent. क्यों? ये first correspondence, for this correspondence, corresponding angles and corresponding sides are equal या congruent. Therefore, this correspondence उसको congruence बोलते हैं. ये correspondence को congruence कहते हैं. क्यों? क्योंकि for this correspondence, corresponding angles and corresponding sides are equal या congruent. Alright? और जो triangle होते हैं उसको कहते हैं congruent. Triangle को कहते हैं congruent. Alright? So I hope you have understood what are congruent triangles, definition. So let's write down the definition. Before I write, let me state it. Fine. For a given correspondence, 6 में से कोई भी एक, for a given correspondence between the vertices of two triangles, correspondence किसका? Vertices of two triangles. If condition है, if corresponding angles and corresponding sides are equal या congruent, then the correspondence is said to be congruent
and the two triangles are said to be congruent. So let's write down the definition. So children, here it is. Congruent triangles. Okay. For a given correspondence. For a given correspondence. 6 correspondence में से कोई भी एक between the vertices of two triangles if this is condition, if the corresponding angles and the corresponding sides are equal, or you can say congruent, then the correspondence is said to be congruence, and the triangles are said to be congruent. Got the definition, children? Congruent triangles. For a given correspondence between the vertices of two triangles, ये दो ट्राइंगल के वर्टाइसिस के बीच का कोई भी एक correspondence is such if corresponding angles and corresponding sides are equal या congruent, then the correspondence, जो भी correspondence है, is said to be congruence and the triangles are said to be congruent. Alright? Correspondence को congruence कहते हैं और triangles को congruent कहते हैं. Be careful, there are quite few words which might confuse you. Correspondence, corresponding, congruence, congruent. Chalo. Now we will write the definition in relation to this triangle ABC and triangle PQR. IE, for a correspondence between the vertices of triangle ABC and triangle PQR if, children, angle A equal to angle P. Children, कौन सा correspondence वो नहीं लिखा मैंने. I'll have to write here. For a correspondence ABC corresponds to PQR. For a correspondence ABC corresponds to PQR. Between two triangles, triangle ABC and triangle PQR. If, yes, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q. मैं जरा ऐसे लिख रहा हूं. Angle C
is equal to angle R, and AB is equal to PQ, BC is equal to QR, and AC is equal to PR. Then the correspondence, कौन सा correspondence? ये वाला जो ऊपर लिया है. Then the correspondence ABC corresponds to PQR is congruence. And अब सिंबल ले लेता हूं. इसका सिंबल ट्राइंगल का. ट्राइंगल ABC is congruent, ये congruent की साइन, is congruent to triangle PQR. Children, जब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR लिखोगे तो यहां सिंबल कॉन्ग्रुएंट का आएगा. We will not normally need to write this, but remember, आप सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस लिखोगे ऐसे. ABC corresponds to PQR is congruence, और ट्राइंगल का सिंबल लिख दोगे यहां उसके आगे, तो दिस विल बी द सिंबल congruent. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. Children, one very important thing I'm going to tell you. Please notice. जब ट्राइंगल का सिंबल हो तो आप नाम बदल सकते हैं. ट्राइंगल ABC आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ACB. देख लो क्यों. ये ट्राइंगल ABC, किसी ने रीड किया ट्राइंगल ABC, मैं रीड करूंगा ट्राइंगल ACB. इट्स द सेम ट्राइंगल. राजू, पप्पू, मुन्नो, वन इन द सेम नेम. ऑलराइट, आर यू गेटिंग मी? चल, तो या इसका भी हम नाम चेंज कर सकते हैं. ट्राइंगल QRP. यू रेड ट्राइंगल PQR और मैंने रीड किया ट्राइंगल QRP. वही तो ट्राइंगल है सेम. बट दिस चेंज इन द ऑर्डर कैन बी डन ओनली व्हेन दिस ट्राइंगल सिंबल इज देयर. यहां ट्राइंगल का सिंबल नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस में मत बदलना. ऑलराइट, ओके चिल्ड्रन, आई होप दैट इज क्लियर and it will give you more clarity when we solve the sums. Okay children, fine. Now let us see well whether the given pair of triangles are congruent or not. Okay, so here we are. Let's see what is the question. State whether the given pairs of triangles are congruent or not. First, you can see a pair of green triangles. You have to show whether these two triangles are congruent or not. When are the two triangles congruent? तो पहले तो छह में से कोई एक कॉरेस्पॉन्डेंस आपको चुनना होगा. वो बाद में ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा, राइट? बट बिग कंडीशन, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, वो चेक करना होगा. चेक करते हैं. See children, what is measure of angle A? 50. क्या उस ट्राइंगल में किसी एंगल का मेजर 50 है? Yes, P. So you can say angle A is congruent to angle P, या equal. Look at the next angle. All right. ये. Look at the next angle. B, that is 60. क्या उधर कोई 60 है? Yes, Q. So angle B is equal to angle Q. Or you can say angle B and angle Q are congruent angles. Then angle C is 70 and here angle R is 70. So angle C is equal to angle R. 50% condition is satisfied. Corresponding angles are equal. Now you have to see the corresponding sides. Chaliye. AB, how much is that? 4. Do we have any side of triangle PQR having measure 4? Yes, PQ. So AB is equal to PQ because दोनों का measure 4 है. Then 5, that is BC equal to QR. Then 3.5, 3.5. So AC is equal to PR. Oh children, corresponding angles and corresponding sides are equal or congruent. Therefore,
द कॉरस्पॉन्डेंस इज कॉन्ग्रुएंस। अब असली मजा आने वाला है। कौन सा कॉरस्पॉन्डेंस? देख लो, आई एम गोइंग टू राइट डैश 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 डैश। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिख दूं ABC, ये ट्राइंगल का मैं जो भी चाहूं लिख दूं ABC, लेकिन यहां आपको देखकर लिखना होगा चिल्ड्रन। चलिए, फ्रॉम वेयर यू विल कम टू नो A corresponds to what, B corresponds to what and C corresponds to what, वो कहां से पता चलेगा? तो पहले चॉइस एंगल्स, द फर्स्ट चॉइस इज एंगल। ओके, एंगल है इक्वल, यस, ये रहे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। एंगल से सीधा कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाता है, दैट गिव्स यू A corresponds to P। सो A फर्स्ट ऑर्डर में, सो राइट P इन द फर्स्ट ऑर्डर। ओके, B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, सो सीधा मिल गया B corresponds to Q। B सेकंड ऑर्डर में, सो Q सेकंड ऑर्डर में। नाउ यू कैन फिल इन द ब्लैंक। ट्राइंगल PQR में P और Q के अलावा कौन बचा? R, सो दैट फिल इन द ब्लैंक। और यहां से देख लो C corresponds to R। So which correspondence? ABC corresponds to PQR is congruence. Therefore, a correspondence, मुझे दो ही लेना चाहिए था, लिखने में तकलीफ हो रही है। Therefore, a correspondence, देखो आपने चेक किया ना, corresponding angles are equal, corresponding sides are equal. Therefore, a correspondence ABC corresponds to PQR is congruence by definition. By definition, these two triangles are congruent. Are you getting me? Let's look at the second pair. The two triangles that we have here are triangle XYZ and triangle DEF. Interesting. First angle X 45 degree, वहां 45 है, yes, so I write here angle X is equal to angle D, correct? Next angle 75 degree, 75 degree is E here, so angle Y is equal to angle E. देखो, मैं A ट्राइंगल XYZ का पार्ट लेफ्ट में लिख रहा हूं, तो सारे पार्ट्स लेफ्ट में ही लिखो ये ट्राइंगल का, और नेक्स्ट ट्राइंगल का राइट में लिखो। टेक केयर, व्हाट आई मीन टू से, यहां एंगल E इक्वल टू एंगल Y, वो तो सही है, एंगल E और एंगल Y सही है, इक्वल है, सो आई कैन राइट इन दिस वे। बट टेक केयर कि लेफ्ट साइड पे एक ट्राइंगल का, तो राइट साइड पे दूसरा ट्राइंगल का, तो यहां X ये ट्राइंगल का है और E उस ट्राइंगल का है, नहीं, वो राइट साइड पे लिखो। राइट, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? चलिए नेक्स्ट, 40 एंगल Z इज इक्वल टू एंगल F एंड साइड्स देख लेते हैं चिल्ड्रन। लेट्स सी, XY 6, ODE is 6, so XY is equal to DE. All right, next YZ is 5, FE is 5, so YZ, XYZ के बाद, all right, is equal to FE. And XZ is 12 and here FD is 12, so XZ is equal to FD. Yes, definition की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। corresponding angles are equal, corresponding sides are equal, or you can say congruent. Therefore, correspondence is congruence and the two triangles are congruent. Now, कौन सा correspondence? हम लिख देंगे, अभी पता तो चल गया कि ये congruent है, so I'm writing. Therefore, a correspondence dash corresponds to dash is a congruence. कैसे? By definition, है ना? By definition you are going to have that. Okay, कौन सा? ये ट्राइंगल का मैं लिख दूं XYZ डैश डैश डैश, उसका देखकर लिखना पड़ेगा। And you can write direct correspondence from angles. क्या यहां एंगल्स है XYZ, X corresponds to D, X पहले ऑर्डर में राइट D, Y corresponds to angle Y is congruent to
angle E. So y corresponds to E. Y is in the second order, write E in the second order. Z corresponds to F. और वो बचा. So which correspondence is congruence? XYZ corresponds to DF is congruence. By definition, all 6 corresponding paths, 3 corresponding angles and 3 corresponding sides, they are called 6 corresponding paths. They are equal. So the two triangles are congruent. Yeah, I can write here. Therefore, now I can put symbol of triangle. XYZ. Here also symbol of triangle. DEF. But here sign of congruent. So here congruent equal to and then this mark. So triangle XYZ is congruent to triangle DEF. That's how we read it. Alright. Moving on to the next one. चलिए चिल्ड्रन यहां एक ही एंगल दिया है ना, एक ही एंगल दिया है, एंगल O 90 और एंगल Q 90. सो एंगल O इक्वल टू एंगल Q. दूसरे दो एंगल के बारे में पता ही नहीं है. सो यू कैन नॉट से, पता ही नहीं तो फिर कैसे कहेंगे इक्वल है या अनइक्वल है? इक्वल होंगे. और साइड्स देखो 4, तो यहां तो 4 सेंटीमीटर वाली साइड ही नहीं है. 3, लेकिन यहां तो 3 सेंटीमीटर वाली साइड ही नहीं है. 5 वाली है, तो सिर्फ एंगल O इक्वल टू एंगल Q है और DN साइड DN इक्वल टू QR है. We do not know about the remaining. So 2 corresponding paths are equal. What about the remaining 4 corresponding paths? We do not know. So we cannot say whether the triangles are congruent or not. Are you getting my point? Yes. Now look here. Angle M 90. अरे 90 है ही नहीं. Alright, ये है 30. So angle A is equal to angle Z. Alright, इसके साइड्स दिए हैं लेकिन इसके तो साइड भी नहीं दिए. So we cannot say whether the two triangles are going to be congruent or not. Is that clear to you, children? Fine. Alright, children. Let's see these two figures here now. Children, till now in the 4 examples we saw 2 triangles which were completely separate. Here they are connected somehow. Alright, children? Dekho, how they are connected here? Like this. Correct? One side is common. RQ and BC. RQ and BC, it becomes common side. तो उसके लिए एक ही नाम आया. Triangle ABC, triangle ADC. AC is a side of this triangle. AC is also a side of other triangle. Are you getting me? और यहां कुछ ऐसा हुआ है. Are you getting me? ऐसे कनेक्ट कर दिया. सो एक एंगल कॉमन आ जाएगा. ये C और R अलग है, यहां C और R अलग है, वो एक ही नाम हो जाएगा. Are you getting me? चलिए, let's decide whether the two triangles are equal or not. Alright? Now see here. First I am talking about triangle ABC and triangle ADC. In triangle ABC and triangle ADC. चलो. एंगल A कितना है? 40. करेक्ट? Which angle? अभी पूरा नाम लिखना पड़ेगा. एंगल BAC. एंगल BAC. ये ब्लू वाला. Alright? Is equal to this black angle is equal to angle. ये 40 है, लिखेंगे DAC. एंगल DAC. Alright? फिर this is 90. Angle ACB, that is blue one. Angle ACB is equal to angle ACD. They are 90 each. Angle ACD. Okay. Now B is 50. Now B is 50 and D is 50. So angle B, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या पूरा लिख लीजिए. एंगल ABC is equal to angle ADC. Angle ADC. So corresponding angles are equal. Corresponding angles तो equal हो गए. अब sides AB5, AD5. So AB is equal to AD. BC4, DC4.
BC4 CD4 CD लिखो DC लिखो, it's one and the same. चलिए AC, very interesting. AC, this is CD here and here it's going to be AC. Children, AC इस ट्राइंगल का साइड और वही AC इस ट्राइंगल का साइड. So AC equal to AC. 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर and it is common side. measure नहीं दिया तो भी आप लिख सकते हैं. Suppose if this measure is not given, still you can write, क्योंकि AC is side of blue, AC is side of black. Triangle, of course. So it's a common side, so they are equal. All right, second condition is also satisfied. Therefore, a correspondence. Right? ये left का लिख दो. ABC corresponds to dash 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 is congruence by definition of congruency या congruent triangles. Are you getting me, children? अब यहां लिखना है हमको. चलिए, कोई एंगल है आपके पास है. चिल्ड्रन, साइड से करना हो तो क्या करोगे? कैन यू से A corresponds to A and B corresponds to D? नहीं, मैं AD को DA भी लिख सकता हूं. कोई AB AD लिखेगा, कोई DA लिखेगा. इट्स वन एंड द सेम. सो यू कैन नॉट से A corresponds, जो फर्स्ट वर्टेक्स है और यहां फर्स्ट वर्टेक्स है, दैट विल कॉरेस्पॉन्ड इन केस ऑफ साइड्स. सो A corresponds to D और B corresponds to A. वो कंफर्म नहीं कह सकते हैं. यदि कंफर्म करना हो तो एंगल से सीधा मिलेगा. यस, अभी बीच में देखना पड़ेगा. A corresponds to A. Yes, A is in the first order, so A should be in the first order. C corresponds to C. बीच वाला देखो, C is last order, C last order. B corresponds to D. देखो ये बदल गया. B corresponds to D. B is in the middle order, so D will be in the middle order. All right, children. I erased the fifth one before doing the sixth one. Doesn't matter. The sixth one is here. Let's solve it. Okay, we have to decide whether the two triangles here are congruent or not. This. All right. Blue line part and let's say this green line part. That is triangle PQR and triangle STR. Whether they are congruent or not. Well, I'll start with angle. Which angle? I take angle P, whose measure is 30, और उस ट्राइंगल में एंगल S has measure 30. So angle P is equal to angle S. All right. Here, let's take angle Q, whose measure is 70, and in that triangle, angle T has measure 70. So angle Q is equal to angle T. Yeah, the two angles are congruent. Next is angle R. R को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला भी R है, वो वाला भी R है. So I'll put the whole name. Angle PRQ. Angle PRQ is equal to 80 और ये बाजू भी 80. Angle SRT. Angle SRT. तो ये तो हो गया. All corresponding angles are congruent. That means 50% condition for congruency is satisfied. अब हमें साइड्स देखना होगा. पहली एक साइड ले लेता हूं PQ. ऑलराइट, whose measure is 11. क्या उस ट्राइंगल में किसी साइड का मेजर 11 है? यस, ये रहा ST. So PQ is equal to ST. चलिए QR. Let me pick QR, whose measure is 6. Here RT has measure 6. कोई RT लिखेगा, कोई TR लिखेगा. चलिए मैंने TR लिख दिया. करेक्ट. And the remaining side PR, whose measure is 9 centimeter. अब यहां RS का भी 9 centimeter है. All right, so let me write RS. Okay, the other 50% condition. So now 100% condition for two triangles to be congruent is satisfied by the definition of congruency of triangles. Correct? So the correspondence is congruence. Now which correspondence? Therefore, a correspondence dash corresponds to dash
is a congruence by which condition? By definition. All right? ये बाजू में ब्लू पार्ट है उसको लिख दो. What is that? PQR. PQR. लेकिन यहां डैश डैश डैश. Children, to write the correspondence, you need to have angles so that you can get the correspondence directly. But can you use the sides and get the correct correspondence? यहां देख लेते हैं. हम इसको भूल ही जाते हैं फॉर अ मोमेंट. हमारे पास साइड्स है तो उससे भी कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. और वो कॉरेस्पॉन्डेंस पाने के लिए आपको एक नहीं दो साइड चुननी पड़ेगी. चलिए, यहां पीक्यू और क्यूआर दो साइड चुनी तो सामने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एसटी और टीआर है. अब पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स से कॉरेस्पॉन्ड करता है. क्या कॉमन है? क्यू. ये दो साइड में क्यू कॉमन है. वो बाजू क्या कॉमन है? टी. दैट्स इट. क्यू कॉरेस्पॉन्ड्स टू टी. क्यू कहां है? मिडल ऑर्डर में. टी मिडल ऑर्डर में आ जाएगा. नाउ चिल्ड्रन, इट इज कंफर्म्ड. क्यू corresponds to T. So you can say P corresponds to S. Look here. Okay. Q corresponds to T, so you can say P corresponds to S. P is in the first order, so S has to be in the first order. Alright. Yahan it is confirmed Q corresponds to T, so R corresponds to R. Last R corresponds to R. So PQR corresponds to STR. That correspondence is congruent. So the two triangles are congruent. I'm not writing here because most of the times only this is required. This is important. दो triangle congruent है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. All right? Okay? Fine, children. All right. Now see the next two figures. Number 7 and number 8. Children, here no measurement is given. You got triangle ABC, that is one. All right. Let me say that is this black triangle, black line region, and the other is a red line region. Correct? We have two triangles. All right. But the measures are not given. But there are some symbols which gives indications of congruent paths. Now look here. Angle BAC, ये और वैसा ही symbol यहाँ for angle DAB. So angle BAC is equal to ये वाला black वाला BAC is equal to red line region में से BAD. Angle BAD या DAB you can say. The next angle B ये वाला see similar symbol. So angle ABC, the black angle ABC is equal to the red angle ADB. Correct? And the third one, angle ACB is equal to angle ADB. Correct? Angle ADB. So corresponding angles are equal. Now corresponding sides. देखो साइड एसी पे एक कट दिया है, साइड एडी पे और एक कट सिमिलर कट है, सो दे आर इक्वल. सो एसी इज इक्वल टू एडी. बीसी के ऊपर डबल मार्क, बीडी के ऊपर डबल मार्क, डबल कट मार्क दिखता है, राइट? सो दैट शोज बीसी इक्वल टू बीडी. ऑलराइट. और एबी कोई मार्क नहीं है, उसमें हम ऐसे ट्रिपल मार्क कर दो, 3 मार्क कर दो टू शो कॉमन साइड. सो ब्लैक साइड, अभी मैं इसको बोलूं ब्लैक साइड AB इज इक्वल टू, उसी को मैं रेड साइड AB भी बोल सकता हूं. करेक्ट? सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. देयरफॉर a correspondence. Yes, black corresponds to red is a congruence by definition.
अब ब्लैक के लिए हमारे पास चॉइस है, कुछ भी लिख दो, ABC, BAC, CAB। भाई ABC लिखेंगे ऑर्डर में, यहां डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। चिल्ड्रन, एंगल है तो मजा करो, राइट, बिकॉज यू गेट डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस। देखो A corresponds to A, फर्स्ट ऑर्डर में A लिख दो, B corresponds to D, बीच में देखो, पहला मत देखो, बीच वाला देखो, B corresponds to D, B मिडल, D मिडल। अब तीसरा तो फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं, A और D आ गया, बच गया B, या तो फिर C corresponds to D, C corresponds to, ये सेम लिख दिया मैंने, ACB corresponds to ADB, ABC, यहां मैंने गलत लिखा है, ABC इक्वल टू ABD, सो यह B corresponds to B, B बीच में आएगा, ऑलराइट, एंड C corresponds to D. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ABD. Okay, इसकी तो लिखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. Is that clear to you? So यहाँ सिंबल से हमको पता लगा कि the two triangles are equal. Next, children, सारे पार्ट्स नहीं दिए हैं. ये ट्राइंगल का ये एंगल कौन सा, PRQ इज इक्वल टू ये ट्राइंगल का ये एंगल TRS, और तो कोई एंगल नहीं है. अच्छा, दो साइड भी है, कौन सा, ये साइड RQ या QR यू में राइट. देखो सिंबल कट मार्क, दैट इज इक्वल टू TR, correct, and this PQ equal to TS. from the mark you see, this is TS और वो है PQ. so only out of 3 and 3 6 corresponding parts, only 3 corresponding parts के बारे में मुझे पता है, and I do not know anything about the remaining 3, whether they are equal or not. and by definition आपको all 6 corresponding parts equal बताना हो, तभी आप कह सकते हैं कि the two triangles are congruent. so here the triangles may be congruent, may not be congruent, we cannot say. children, now when we have to show whether the two triangles are congruent or not, we will have to show all 6 corresponding parts equal, and to do that the method becomes very lengthy. so are there any shortcuts to show whether the two triangles are congruent or not? Instead of showing all 6 corresponding parts, can we show any 3 corresponding parts are equal and yet the two triangles are congruent? दो ट्राइंगल के बीच सिर्फ 3 corresponding parts equal है या congruent है, और हम कह सके कि yes, these two triangles are congruent. तो है, there are 5 shortcut tricks in the form of postulate या theorem कह दो, theorems. Alright, so in tomorrow's session we will see those 5 shortcut tricks to show whether the two triangles are congruent or not. Till then, goodbye. Have a good day.